Good morning, students. Today we are going to start the next chapter, that is surface chemistry. Surface chemistry. So, what is surface chemistry? Surface chemistry. So, surface chemistry is defined as the branch of chemistry which deals with the study of phenomena taking place at the surfaces or interfaces and the nature of surfaces So, what is surface chemistry? The branch of chemistry which deals with the study of phenomena taking place at the surfaces or interfaces and the nature of surfaces. Okay? So, this is known as surface chemistry. Now, here we have the phenomena taking place at the surfaces. Now, which type of phenomena which can take place at the surfaces? So, here first one is adsorption. The phenomena which can take place at surface is known as adsorption. So, as far as adsorption is concerned, first of all we will understand what is adsorption. See, so what is adsorption? Adsorption is defined as the phenomenon of accumulation of substances in more concentration on the surfaces as compared to bulk, means to say that the particles will be accumulated in more concentration on the surface as compared to bulk. Particles की ज्यादा concentration होगी कहां पे? Surface पे ज्यादा होगी as compared to bulk. ठीक है? So, यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, सपोज ये सरफेस है, तो अगर पार्टिकल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरफेस के ऊपर ज्यादा है, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरफेस के ऊपर ज्यादा है और बल्क में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है, then this type of phenomena is known as adsorption. So what is adsorption? Adsorption is distribution of the particles in more concentration or accumulation of the particles in more concentration on the surface as compared to bulk. बल्क में पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम होगी, सरफेस पे कंसंट्रेशन जो वो ज्यादा होगी. दिस फिनोमिना इज नोन एज एडसॉर्प्शन. ठीक है? सो एडसॉर्प्शन और एक फिनोमिना आता है एब्सॉर्प्शन का. ठीक है? नेक्स्ट जो फिनोमिना है जो हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज एब्सॉर्प्शन.
ठीक है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन द पार्टिकल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मींस सरफेस पे और बल्क में सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का, then this phenomena is known as absorption. So what is absorption? It is the distribution of, it is defined as the phenomena of uniform distribution of particles, phenomena of uniform distribution of particles, on the surface as well as bulk, ठीक है। फिनोमिना ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस एज वेल एज बल्क, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर हमारे पास स्पंज है, स्पंज को हमने वाटर में डिप किया, देन व्हाट विल हैपन, जो वाटर है दैट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जो water है that will be uniformly distributed. Uniform distribution of the particles on the surface as well as bulk is known as absorption, ठीक है। This is known as absorption. और adsorption की अगर बात करें तो adsorption में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, adsorption में आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। और एब्जॉर्प्शन के केस में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इफ देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स द कॉन्सेप्ट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इफ देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स द फिनोमिना इज नोन एज व्हाट, एडसॉर्प्शन, ठीक है। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। सो नेक्स्ट इज adsorbate see what are adsorbate molecules. The molecules which are undergoing adsorption, the molecules which undergo adsorption, the molecules which undergo adsorption are known as adsorbate molecules. Are known as adsorbate molecules, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल्स की एड्सॉर्प्शन हो रही है उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। एंड नेक्स्ट इज एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट इज द सरफेस। व्हाट इज एड्सॉर्बेंट? द सरफेस on which the adsorption will take place. ठीक है, जिस सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होगी दैट इज नोन एज व्हाट, एड्सॉर्बेंट। सो सिंपली अगर मैं अब स्पेसिफिकली मोर प्रिसाइजली अगर एड्सॉर्प्शन को डिफाइन करूं तो एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होगा, द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स are adsorbed on the surface of
adsorbent. Adsorbent molecules are adsorbed on the surface of a adsorbent. ठीक है, तो ये है आपके पास adsorption. Adsorption के केस में क्या होता है? Adsorbent molecules are adsorbed on the surface of a adsorbent. ठीक है, so this is known as adsorption. Now there may be a question. You may have to distinguish between the adsorption and absorption. You may be asked to distinguish between adsorption and absorption. ठीक है, तो adsorption और absorption में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो. Adsorption आपको क्या बताया? Accumulation of substances in more concentration on the surface as compared to bulk. ठीक है, absorption क्या बताया? Accumulation of the substances in same concentration on surface as well as in bulk. In case of adsorption, there is non-uniform distribution of the particles. Adsorption के केस में क्या होगा? There will be non-uniform distribution of the particles. Absorption की अगर बात करें तो absorption के केस में क्या होगा? There will be uniform distribution of the particles. There will be same concentration. Absorption के केस में there will be same concentration in the surface as well as bulk. जबकि अगर adsorption की बात करें तो there will be different concentration on the surface as well as in the bulk. Next आ जाता है आपके पास positive adsorption. Positive adsorption. So अगर हम positive adsorption की बात करें, so what is positive adsorption? Positive adsorption is defined as the accumulation of substances in more concentration on the surface. अगर पार्टिकल्स जो हैं, अगर सब्सटेंसेस जो हैं वो सरफेस पे ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, दिस टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन इज नोन एज पॉजिटिव एडसॉर्प्शन. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नेगेटिव एडसॉर्प्शन. Negative adsorption. How we can define this negative adsorption? Negative adsorption, it is defined as the accumulation of substances in less concentration on the surface as compared to bulk. Means bulk में particles की ज्यादा concentration होगी और surface पे क्या होगी? कम होगी. So it is defined as the accumulation of the substances of substances in more concentration in less concentration on surface as compared to bulk. As compared to bulk or relative to bulk. बल्क में ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, सेंटर में ज्यादा कंसंट्रेशन होगी एज कंपेयर टू सरफेस. सो दिस टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन इज नोन एज नेगेटिव एडसॉर्प्शन. ठीक है, इस तरह के एडसॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव एडसॉर्प्शन. सी नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसॉर्प्शन की. देखो, पार्टिकल्स अगर सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला? एडसॉर्प्शन. सरफेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिनन को हमने क्या बोला? एडसॉर्प्शन. बट इफ द पार्टिकल्स जो एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, इफ दे स्टार्ट लीविंग द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, देन दिस फिनोमिना, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिसॉर्प्शन. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? डिसॉर्प्शन. एंड व्हाट विल बी डिसॉर्प्शन? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिसॉर्प्शन. So desorption will be
the opposite of adsorption, when, so here we have desorption. What is desorption? If the adsorbate molecules if the adsorbate molecules start leaving the surface of adsorbent, this phenomena is known as desorption. This phenomenon is known as desorption. Is known as desorption. So देखो adsorption में क्या हो रहा था? Adsorbate molecules were present on the surface of adsorbent plus adsorbent का जो surface है they are constituting adsorption, means adsorbate molecules are present on the surface of adsorbent. ठीक है, adsorbate molecules are present on the surface of adsorbent. इस phenomenon को हमने क्या बोला? Adsorption. अब अगर इसका opposite देखें, if the adsorbate molecules starts leaving the surface of adsorbent, then this phenomena is known as desorption. इस phenomenon को क्या बोलेंगे? Desorption. And एक और कॉन्सेप्ट आता है यहां पे sorption, that is sorption, and this is defined as, so what is sorption? If adsorption and absorption both the processes are taking place, अगर adsorption भी हो रही है absorption भी हो रही है, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? sorption. ठीक है, particles may be accumulated in more concentration on the surface, but adsorption and absorption both the processes are taking place and they are not distinguishable. So this phenomenon is known as sorption, जिसमें दोनों processes हो रही हैं, adsorption भी हो रही है, absorption भी हो रही है, but जो particles हैं वो surface पे ज्यादा concentration पे accumulate हो रहे हैं as compared to bulk, means adsorption भी हुई, absorption भी हुई, but particles की concentration जो है वो surface पे ज्यादा है as compared to bulk, so this type of phenomena is known as a sorption. ठीक है, so in case of sorption, both adsorption and absorption will take place. But particles will be accumulated. Particles may accumulate in more concentration on surface, ठीक है, as compared to bulk. ठीक है, so this phenomena is known as sorption. इस phenomena को क्या बोलते हैं? sorption बोलेंगे. ठीक है, so students next आ जाता है हमारे पास cause of adsorption. Cause of adsorption. Cause of adsorption. Adsorption होती क्यों? ठीक है, so what is the cause of adsorption? See, here I am considering the two molecules. One molecule which is present at the surface
and one molecule which is present at the bulk. Here I have two containers. यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं molecule which is present on the surface, and यहां पे मैं बल्क का मॉलिक्यूल जो है वो कंसीडर कर रहा हूं. बल्क मीन्स यहां पे सेंटर में कोई मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है. नाउ सी, यहां पे जो भी मैंने ये एरोस शो कर रखे, दीज आर शोइंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्टिव फोर्सेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सी, ये एडसॉर्प्शन का केस है. ये एडसॉर्प्शन का केस हुआ, और ये जो केस है ये किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन. ठीक है. सो अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यहां पे जो बल्क में पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग, दिस मॉलिक्यूल इज एक्सपीरियंसिंग यूनिफॉर्म फोर्सेस इन ऑल द डायरेक्शन, or in other words we can say that balanced forces. So molecules present in the bulk are under the influence of balanced forces. ठीक है. जो भी यहां पे बल्क में जो मॉलिक्यूल है, या जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है. दे विल एक्सपीरियंस बैलेंस्ड फोर्सेस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन. मीन्स जितनी फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है, उतनी ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है. मीन्स एक फोर्स दूसरी फोर्स को क्या कर रही है? काउंटर बैलेंस कर रही है. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. जितनी फोर्स अपवर्ड साइड में है, उतनी ही फोर्स जो वो डाउनवर्ड साइड में है. नेट फोर्स क्या हो गई? जीरो हो गई. यहाँ पे जितनी इस डायरेक्शन में है, उतनी ही इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी. सेम इज द केस हियर. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल विल बी जीरो, as this molecule is experiencing what? Uniform force from all the direction. Okay. Now, in case of adsorption के केस में, this force and this force and this force. See, अगर इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, इस फोर्स की बात करो, तो इसको तो काउंटर बैलेंस कर लिया इसने इस डायरेक्शन में, बट डाउनवर्ड साइड में this. So this molecule is feeling consistent from the downward side. Or here we can say that the molecules which are present on the surface are under the influence of unbalanced forces. Molecules present on the surface are under the influence of balanced forces. Are under the influence of unbalanced forces. Are under the influence of unbalanced forces, and these unbalanced forces are responsible for the phenomenon of adsorption. Adsorption will take place
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these unbalanced forces. ठीक है, experienced by the molecules present on the surface. Now the molecules which are present on the surface, they are experiencing unbalanced forces, so they will try to retain their residual forces by attacking the molecules, other molecules on the surface, attacking and retaining the molecules on the surface. So this is the main cause of the adsorption. So in case of adsorption, you can see the molecules are present on the surfaces. The molecules which are present on the surfaces are under the influence of unbalanced forces, and these unbalanced forces are responsible for the adsorption. Why? Because due to the unbalanced forces, the molecules which are present on the surface, they will try to satisfy the residual forces by attacking or by attracting the other molecules inward. ठीक है, तो और जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको जो है ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू रिटेन दोज मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस. सो दिस इज द मेन concept which is behind the adsorption. So as the molecules are under the influence of unbalanced forces, they will try to attract the other molecules and retain those molecules on the surface. Why? To satisfy the residual forces. So this is the main cause of adsorption, and in the next lecture we will study the different types of adsorption, और उसमें हम जो स्टडी करेंगे फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन. ठीक है, तो फिजिकल एडसॉर्प्शन की अगर बात करें तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में वीक वन ओवर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, केमिकल एडसॉर्प्शन में जो वो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे. ठीक है, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. आज के लेक्चर में इतना ही. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.